Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve journal entry problem number 5 from the textbook of Telugu Academy Board of Intermediate Education first year. Now let us solve this problem. It is mentioned that journalize the following transactions in the book of Dinesh. So Dinesh is the owner. Dinesh कौन है इधर? Owner है. So पहला काम हमको क्या करना है? We need to write the heading. What will be the heading? Journal entries in the books of Mr. Dinesh. Now we'll move towards our transaction. 1st April के दिन क्या transaction हुआ? Dinesh started business with cash of rupees 50,000. क्या हो रहा? Owner business शुरू कर रहा, right? Whenever owner commence a business, he is a giver to the business. ठीक है? Business में पैसे introduce कर रहा owner. Always remember, जब कभी भी ओनर कुछ भी बिजनेस में लेके आएगा, we need to consider it as capital account. Here, what owner is doing? Owner is starting business with cash. तो बिजनेस में आ रहा क्या? Cash. So according to the rule of real account, debit what comes in. बिजनेस में क्या आया? Cash. इसीलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए, right? Cash account debt are 50,000 to giver. ओनर जब कभी भी गिवर रहेगा so we need to write it as capital account always. So the journal entry will be cash account data to capital account 50,000 being business started with cash. Now let us move to the next transaction, that is 2nd April. Sale of goods for cash. Goods बेच डाले, right? तो बिजनेस में आया क्या? कैश. और बिजनेस में से जा रहा क्या? गुड्स. गुड्स गए तो हम क्या लिखते? सेल्स. व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन. क्या आया बिजनेस में? हम क्या करें? सेल. तो जब कभी भी बिजनेस में से गुड्स आएंगे, we need to consider it as sales, right? So cash account data to sales account being goods sold for cash. Now let us see the next transaction. Purchase of goods for cash rupees 15,000. आप क्या करें? पैसे दिए और गुड्स खरीद के ला लिए. तो बिजनेस में आए क्या हमारे? गुड्स. हम क्या करें? परचेज. परचेजेस अकाउंट डेटा डेबिट में आ गया और हमारे बिजनेस में से गया क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. उसको क्रेडिट कर देना है. सो परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट will be the journal entry for this transaction. Now let us move towards the next transaction, that is sold plant and machinery rupees 5,000. 5,000 में आप अपनी प्लांट और मशीनरी बेच रहे हैं. So here the plant is nothing but part of a machinery. मशीनरी के एक पार्ट को हम प्लांट बोलते हैं, राइट? तो आप क्या करें? बेच दिए. बेचे तो प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में से बाहर जाता है. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और हमारे बिजनेस में आया क्या? कैश. तो हमको लिखना क्या है? कैश अकाउंट डेटा टू plant and machinery account being plant and machinery sold for cash, right? Now let us move towards our next transaction, that is cash paid to Rahim. अब ये समझना है हमको. रहीम को आप कैश पे करें तो रहीम इज अ रिसीवर. तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, राइट? एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से. तो बिजनेस में से गया क्या? कैश. तो क्रेडिट में क्या आएगा? कैश. और डेबिट में रहीम. सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री रहीम्स अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू रहीम. नाउ लेट अस सी द रिमेंबर वन थिंग, आप वेजेस पे करो या फिर इंटरेस्ट पे करो या फिर कमीशन पे करो, दिस ऑल आर योर एक्सपेंसेस. ठीक है? एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट में लिखते.
अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट में क्या आ गया, सैलरीज, और पे करेंगे तो बिजनेस में से जाएगा क्या, कैश। तो क्रेडिट में अब क्या आता, कैश अकाउंट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, salaries accounted to cash account being salaries paid. Now we have completed problem number 5. Let us complete problem number 6 in our next video. Thank you.